नमस्कार आपण समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आप सहित डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ एनपीसी स्टैंडिंग कमिटी आम ये कौन कंपोजिशन आ फंक्शन नोट्स टी मुझे सेयार करी आ वीडियो आगे को मुझे जे आपण मैंने पीडीएफ नोट्स टी किपर भाई पाइपर। चलते स्टार्ट करवा। द एनपीसी स्टैंडिंग कमिटी इज ए कंपोज ऑफ चेयरपर्सन सेवरल वाइस चेयरपर्सन्स द सेक्रेटरी जनरल एंड अदर मेंबर्स। तो जो स्टैंडिंग कमिटी अच्छी सी कौन ना किसी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन आउ सेक्रेटरी जनरल आउ किसी अन्य मेंबर मानक नहीं कौन गठित। दे आर इलेक्टेड बाय द एनपीसी फ्रॉम द डेप्यूटीज फॉर ए 5 year टर्म। तो से 5 वर्ष टर्म हिसाब से इलेक्टेड होती। द सेम ऑज द एनपीसी टर्म एनपीसी टर्म सेम हिसाब से कौन इलेक्टेड होते। जदि आप एनपीसी कंपोजिशन एंड फंक्शन वीडियो देखी ना ऑलरेडी मो वीडियो बन सारी आपने कौन प्ले स्टोर देखिपारे और नोट्स पाइबे मुझे आगे कहि। So the standing committee shall exercise its functions and powers until a standing committee is elected by the succeeding NPC. In the first section of the third NPC, 13 NPC, 175 members of the 13 NPC standing committee were elected. The first कौन होची ना 175 जन मेंबर थांती से 13 NPC कौन इलेक्टेड होती and they have been performing their duties since March 18. तो देखिए हम स्टार्टिंग देखिए none of the NPC standing committee members may hold office in the state administrative, supervisory, judicial or prosecutorial organs. So the chairperson and vice chairperson of standing committee shall serve no more than 2 consecutive terms. Those who have severed a chairman of NPC standing committee since the founding the People's Republic of China, including कि हम देखिए तो कि पूर्व सब कौन तार चेयरपर्सन थे ना लिउ साउजी जुंदी ये जियांग पिंजेन वानली हुईसी लिपिंग वू बांगू एंड जांग डिजांग। The chairman of 13 NPC standing committee is Li Jansung. The chairperson of NPC standing committee directs the work of the standing committee. The vice chairperson of the secretary general assists the chairperson in his work, in her work. The chairperson, vice chairperson and secretary general to constitute the council of chairperson which handles the important day-to-day work of the standing committee. So the NPC standing committee normally meets once every month or every 1-2 months रे कौन once every 2 months 2 मास थरे माने कौन normally मिसंती। It may hold to interim meeting when there is a special need। तो आउ मते कोन कि जदि आवश्यक पड़े ताहा मते से माने कोन मीटिंग करंती। The NPC standing committee is responsible to the NPC and reports to it on its work. The NPC has the power to alter or annul inappropriate decisions made by the standing committee and to remove its member from office. Next देखिए functions and power। तो आम composition देखिए बर्तमान function और power देखिए। तो function power कौन है ना legislative power। तो the NPC and its standing committee jointly exercise the power of enact law in China। तो NPC मान नेशनल पीपुल्स कांग्रेस आउ स्टैंडिंग कमिटी मिसिकरी कौन कार्यकारी करती जो नुआ नुआ एक्ट बनवा सब चाइना रो को एक्ट बनवा कौन करवा। द NPC स्टैंडिंग कमिटी में इनैक्ट एंड अमेंड ऑल लॉस। और NPC और स्टैंडिंग कमिटी कौन संशोधन मध्य करती आईन को कार्यकारी कर पारती संशोधन मध्य कर पारती। एक्सपेक्ट दोज दैट शुड बी इनैक्टेड एंड अमेंड बाय द NPC व्हेन द NPC इज नॉट इन सेक्शन its standing committee may partially supplement and amend law the NPC enacted as long as the changes do not contradict the jaws of the basic principles. The standing committee also has the power to interpret the constitution and other laws। तो ये कौन legislative power माने कौन स्टैंडिंग कमिटी सहित NPC मध्य मिसिकरी सब किसी आईन को इनैक्ट करबा अमेंड करबा सब कार्य करती। नेक्स्ट देखिबा सुपरवाइजरी पावर। सुपरवाइजरी पावर कौन ना द NPC स्टैंडिंग कमिटी हैज द पावर टू सुपरवाइज enforcement of the constitution। It supervises the work of the state council, the central military commission, the national supervisory commission, the supreme people's court and the supreme people's
procurate. So it has the power to annual administrative regulations, decisions and other of the state council that to go against the constitution and other laws, and to annual local regulation to decisions of the organs of the state power, provinces, autonomous regions and municipality directly under the central government that to contract the constitution, other laws and regulations. तो ये कौन सुपरवाइज करती स्टैंडिंग कमिटी एनपीसी को मिसिकरी नेक्स्ट देखिबा द फंडामेंटल मीन्स एनपीसी इट इज द इम्पोर्टेंट बर्तन देखिए कौन ना द पावर टू डिसाइड अपॉन मेजर इश्यूज तो कौन ना व्हेन द एनपीसी इज नॉट इन सेक्शंस तो एनपीसी सेक्शन न थाए सेते बेले द स्टैंडिंग कमिटी एग्जामाइन्स एंड अप्रूव्स पार्टियल एडजस्टमेंट टू प्लान फॉर नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर द स्टेट बजेट दैट प्रूव नेसेसरी इन द कोर्स ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन द स्टैंडिंग कमिटी माने कौन एनपीसी रो जदि कौन सी एनपीसी सेक्शन नथियो ताहले स्टैंडिंग कमिटी एनपीसी रो कार्य किछि करथाय द स्टैंडिंग कमिटी डिसाइड्स whether to ratify or abrogate treaties and important agreements to reach with other countries. It institutes system of title and ranks for military and diplomatic personnel in other specific titles and the ranks. The standing committee also institute state medals and titles of honor and decides on their conferment. So next कौन देखिए ना it makes decision on the granting of special pardons. It decide on general or partial mobilization and on the entering into a state of emergency throughout China or in particular provinces. The autonomous regions or municipality directly under the central government. When the NPC is not in section, the standing committee decides whether to proclaim a state of war in the event of an armed attack on China or in fulfillment of international treaty mobilization concerning a common defense against the aggression. Next देखिबा कोन the power to appointment and remove from office member of to central state organ. So when the NPC is not in section, its standing committee decides on the the choice of ministers in charge of ministers commissions. The governor of the People's Bank of China, the auditor general of secretary general of the council upon nominated by the premier of the state council. So appointment जो करती standing committee, it decides on the choice of other members or central military commission upon nomination by the chairman of the commission. अब यहाँ डिसाइड करें जे choice of the other member जो choice मैंने बचा जीवो कोथि में सेंट्रल मिलिटरी कमिशन पे से को नॉमिनेशन बाय चेयरमैन ऑफ द कमिशन ए कमिशन चेयरमैन को हिसाब से हम लोग नॉमिनेटेड होई थांती इट अपॉइंटमेंट्स और रिमूव्स द डेप्यूटी and directors and members of a national supervisory commission at the recommendation of the director of the commission. It appoints or removes at the recommendation of the president of supreme people a court, the vice president and judge and supreme people's court, member of his judicial committee and president of military court. It appoints or removes at the recommendation of procurator general of supreme people, procurate the deputy procurators general and procurators of the supreme people's procurate, members of its procurate committee and chief procurator of military procurated, and approves appointment or removal of the chief procurators of the provinces, autonomous regions and municipality are directly central government. तो ये हम देखिले जे स्टैंडिंग गवर्नमेंट कौन एनपीसी भले कौन से दे अपॉइंटमेंट करे नॉमिनेट मध्य करे तो ये कौन स्टैंडिंग कमिटी आर नेक्स्ट वीडियो हम देखिबा प्रेसिडेंट करो चाइना को प्रेसिडेंट करो बा इनुमरेट द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आनिबी तो एही वीडियो चैनल रे एडी हांतु नोट को शेयर करंतु थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो जदि आपण यार पीडीएफ चाहंती ता डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे देछि सेते जॉइन हांतु आपण मन से देखो नोट्स मिल जिवो।